हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ विधि कल्चर। आज हम एक बार फिर आपके साथ हैं एक नए सेशन में विद रिस्पेक्ट टू द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द फैमिली लॉ। वी हैव ऑलरेडी डन द 3 सेशंस इन दिस सीरीज एंड दिस इज द fourth session. So this is the part 4 of our series with respect to the important topics of the family law, in which we are covering the important topics for the family law. And why it is important, why we are discussing this, because as we know that examinations are there, like due LL.B 2022 examination is going to happen very soon. So these topics are very, very important. Before going into the examinations, you must know about these topics. You must understand these topics because questions will come from these topics only. These are very, very, very important topics when it comes to the family law and specifically the Hindu Marriage Act. So in this session today, we will talk about the section 7 of Hindu Marriage Act. Section 7 of Hindu Marriage Act, which talks about the ceremonies to be performed in a Hindu marriage or ceremonies for a Hindu marriage. Ceremonies for a Hindu marriage. So, what are the ceremonies to be performed in a Hindu marriage? What does this law talks about? जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है ये क्या कहता है व्हेन इट कम्स टू द सेरेमनीज, कि किस तरीके की सेरेमनीज परफॉर्म की जाएं शादी के दौरान जिससे कि वो एक वैलिड मैरिज कहलाए. So as we all know that Hindu religion in itself is a very liberal kind of religion in which there is no as such a lot of foundations to be performed. ऐसा कोई नहीं है कि आप कोई चीज परफॉर्म करेंगे then only you will become a Hindu or so. So such conditions are not there. The similar thing exists in this law as well. इस law के अंदर भी कुछ ऐसे ही provision हैं. Like there are 2 points to be recorded here. So the first one is with respect to this ceremony. They say suppose A and B. There are two persons who are going to get married. This A and B. Suppose A is the boy and B is the girl. सो देर इज अ पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबल है कि भाई हो सकता है जहां से ये बिलोंग करते हैं, ए बिलोंग करता है, लड़का जहां से बिलोंग करता है, हो सकता है इनके यहाँ जो शादी के रिचुअल्स हैं या फिर जो बी के यहाँ जो रिचुअल्स हैं, दे कैन बी डिफरेंट. ओके, this they must be following different kind of rituals in the customs, and they must be following different kind of rituals and the customs, or you can say the customary rites. So they must be following different rights. This is a possibility. Okay. So when this is a possibility, what does this law says? It says, there is a, minimum criteria. There is a minimum criteria set here that you must follow, that, you have to follow the customs or the rituals or the customary rights of one of the parties, either A or B. किसी एक के कस्टमरी राइट्स और रिचुअल्स को आपको फॉलो करते हुए परफॉर्म करना है, एंड दैट विल बिकम अ वैलिड मैरिज. इट इज अ कंडीशन ऑफ अ वैलिड मैरिज और द सेरेमनी ऑफ अ वैलिड मैरिज. की भी आप किसी भी एक के कर लीजिए. हमारे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ए बी के परफॉर्म किए, बी के रिचुअल्स जो राइट्स थे कस्टमरी राइट्स थे उसको हमने यहाँ पे परफॉर्म किया पूरी तरीके से, देन इट विल बी अ this will be considered as a valid ceremony for a Hindu marriage. उसको माना जाएगा. This is a minimum criteria. Otherwise, it is your will. Now you can perform it as per the rituals of A also, B also, and if you want, you can follow any of the rituals. But this is the minimum criteria which you must follow while performing the marriage, while solemnizing the marriage. आपको minimum criteria ये follow करना है. Now there is a second point. What does this second point says? अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है ये बात करता है सप्तपदी की. सप्तपदी की बात कहता है. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय सप्तपदी? सप्तपदी इज नथिंग बट 7 steps अराउंड द सेक्रेड फायर. ठीक है, जिसको हम 7 फेरे भी कह देते हैं, तो इस तरीके से. और ये साथ ही ये भी कहता है, मान लीजिए कि भाई यहाँ पे है कि भाई सप्तपदी इज अ असेंशियल पार्ट ऑफ दिस मैरिज. कहता है कि जो सेरेमनी है उसके अंदर जो है ये एक असेंशियल पार्ट है. देन
व्हाट शुड हैपन कि भाई हम कब मानेंगे कि वो मैरिज जो है वो कंप्लीट हो गई या फिर वो सेरेमनी कंप्लीट हो गई, व्हेन द सेवेंथ स्टेप गेट्स कंप्लीटेड, सेवेंथ स्टेप gets completed, then only we will say that this marriage is complete. So this was about this particular section. These 2 points must be remembered when you are preparing for this examination or any examination, because this is very very important. So let's read what exactly this section talks about. This is section number 7. Section 7 क्या कहता है? So ceremonies for a Hindu marriage. तो पहला पॉइंट क्या कहता है? A Hindu marriage may be solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of either party thereto. किसी भी एक पार्टी के हिसाब से, either party. Then the second point, what does the second point talks about? It says where such rites and ceremonies include sappadi, अगर sappadi उसमें included है, that is the taking of 7 steps by the bridegroom and the bride jointly before the sacred fire. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, marriage becomes complete and binding when the 7th step is taken. जैसे ही 7th स्टेप वहां पे कंप्लीट होगा, लिया जाएगा, वैसे ही जो है वो शादी को कंप्लीट और बाइंडिंग मान लिया जाएगा. सो दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आपको एक क्या करना है, किसी भी एक पार्टी के हिसाब से जो उसके कस्टमरी राइट और सेरेमनी है उसको परफॉर्म करना है. देन सेकेंड इज दैट इफ दोज राइट्स इन द सेरेमनी इंक्लूड द सप्तपदी, अगर सप्तपदी को इंक्लूड करते हैं देन डेफिनेटली 7 steps आर mandatory. You must complete the 7 steps, then only it will become complete and binding marriage. So this was a very very important topic. You must keep in mind, it is simple, so keep in mind this thing because this may come in your exam. So thank you so much, thank you for joining. Bye bye, take care everyone.